Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, Alina, you're audible. So yeah, let's start. Welcome to the first session of Tech Talks, which is code and repo and deploy intro to Git and GitHub. This is Alina Shoaib from SC9A, General Secretary of Cybersecurity Club NUST. I with my fellow mate Talia Hamid, Press Secretary of Cybersecurity Club NUST. We are going to be your moderator for this event. So before starting off with this event, let me brief you about our society cybersecurity club. So what is NUST Cybersecurity Club? NUST Cybersecurity, it's not we know that in today's time the world is not safe, and so to brief you about the whatever the happenings we have these days and to like stay safe, we conduct events and workshops. But for this event we are not only covering the cyber area, we are also covering the general stuff like Git and GitHub. So starting off with the session tech series, the first session is about Git and GitHub. Yeah, we also like to motivate to enable secure environment, setting up path for those who want to pursue in this field, and allowing empowering people with the latest technological trends, allowing you to know the weaknesses of your design. So let me hand over this to Talia. अलीना आपकी स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही। Alina, can you please reshare the slides? तालिया आप ऐसा करें, सेंड मी द स्लाइड्स एंड आई विल डिस्प्ले माय स्क्रीन। तो फिर आगे पीछे मैं मूव कर लेता हूँ क्योंकि माय इंटरनेट आई थिंक इज मच बेटर देन योर्स राइट नाउ। Okay, okay. Okay. Yeah, just wait a second, हम वो स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं एंड वी विल बी राइट बैक विद यू। Just wait a second. Our moderators are doing something. They are just they will be right back. Wait a minute. Okay, I guess this was a part where you had to start off, right, Talia? Yes. Okay, Thank you. Assalamu alaikum, everyone. This is Talia Hamid. Coming towards the event, firstly, I would like to mention our partners for this episode. Next slide, please. So our partners for the first episode of Tech Talks are DSC NUST, IEEE SEEKS, IEEE WIE, and MLSA Islamabad. All thanks to them for this collaboration. Now, let me introduce you to our very esteemed instructors of this session. Next slide, please. Thank you. So we have with us Mr. Asim Khaskeli as our speaker. Asim is currently the Joint Secretary of Technical
and partnerships team at NUST Cybersecurity Club. He is the AI and ML lead at DSC NUST. He is also a deep learning researcher at Tackle NUST and is working as a technical writer at Medium. We hope to learn a lot from you, Asim, in this session. Then we have Mr. Arsalan Dilaver as our guest speaker tonight. He is the only GitHub campus expert in Pakistan and is currently working as a Microsoft Learn student ambassador and a DSC lead at his parent institute, NUML. Also, he holds the badge of being the MLH team lead. His extraordinary skills have led him to being an open source contributor at the JavaScript framework of Next.js. Arsalan, we warmly welcome you to this session. To make this session hassle-free, we want your support. Please follow these basic instructions. Please do not try to turn on your mics. Write your questions in the chat box for QA sessions. Your questions will be communicated to the instructors. We will have separate QA session at the end. In case you have any queries or issues, please raise your hand. Thank you all for your patience. Without any further ado, let's start the session. Over to you, Asim. Thank you. All right, so I'll be sharing my screen now. Let me know when it is being shown. Okay, Yes, they are visible. Okay, thank you. So let's start off the session then. So first of all, I would like to introduce myself. Then, okay, so I am serving as a joint secretary, technical and partnerships at Cybersecurity Club NUST. I am also an AIML lead at DSC NUST, working as a deep learning research intern at Tackle R&D Center, and also a technical writer at Medium. You can follow me, you can connect with me on GitHub and LinkedIn. The handles are given below. So, okay, so coming to the point, what is version control system? So, version control system is basically a software utility that tracks and manages. So why in the world do we need a version control system, and why it is necessary? So suppose you are working on a large project, and it is going to be very difficult for you to keep a track of the changes you have done in the process, basically in the process of making that project. So in large projects, not only the changes that you are doing matter, but when those changes are made also matter. So especially when you are working in a team, this problem is basically complexified, because each and every user will be making changes. So it will be very, very difficult for you to identify which user has changed which things and when it has made a particular change. So I worked on a file basically and gave it to you, and then you made some changes, and then you gave it to me. And then after some days, you will eventually lose the track of the changes, because you want to know where did a certain change happen and which user did that particular change. So there will be no evidence that this change has been done by a certain user. So yeah, so this is all. And also the version control system is also known as revision control system or source control system. So the version control system is not just concentrated to software development, but however, in this era, it is tightly coupled with the software development industry, because version control provides with high flexibility to developers, in which they can keep a track of the changes, and they can collaborate on large projects easily, and they can easily handle big projects, because we normally work on semester projects. हम क्या करते हैं कि पिछले semester projects करते होते हैं, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता, हम लोकल मशीन में कर रहे होते हैं. लेकिन जब लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का ओएस हो गया, विंडोज 10 हो गई, तो देयर आर millions of lines of code. So a single person can't just do that stuff. There is a whole team who's working on that. All right. So and then the second point, coming to second point, that there's a productivity plus. So what does that mean?
working in parallel mode rather than serial, because there will be no passing on of projects. All the team, because सारी जो team होगी हमारी, that will be working on a single feature. That a single person will be working on a single feature, and the other person will be working on another feature. Okay, and they will be working in parallel mode rather than passing on the project and saying कि अब ये मैंने कर लिया, अब आप करें, अब उसमें changes करें, फिर इस तरह नहीं होता. Okay, so evidence of events. Obviously, when you are working in a company, so you need to keep a record of the changes that are being happened. There is a checkpoint system in version control system. Every commit, basically I have used that commit word now. It is a tech jargon, so you will know when in the next when Arsalan will be giving the hands-on session, you will know what the commit is. So every commit is recorded with a snapshot of the file system. So there is a snapshot of the file system of a particular instance, and that is being recorded. So there are basically two types of version control systems. There is a centralized version control system, and there is a distributed version control system. So centralized version control system is based on the idea that there is going to be a single server where the data is kept, and each user works on the minimal data needed. Changes are being made in the server directly, and there is no record of the local changes. So let's dive in. Let's see how does it look like. So you can see that if I share my pointer, there's a central server, there's central repository, server repository, and there's a working copy. These are the users basically. They are connected to the main server. Okay, and every change they are making is directly pushing to the main server, and when they will commit a certain change, these changes will be reflected to every user. So there are chances that if there was a bug introduced in a certain commit, then that bug will be reflected to all the copies, which will cause a lot of problems. So coming to the next slide. So let's see what are the cons of centralized version control system. So it provides less flexibility because you are not having access to full data, rather a part of it. So basically you are not having a full copy of the person, because that will cause a lot of problems. Okay, so and there is a necessary internet availability because local changes aren't recorded, and every change is recorded when it is pushed to the main server. Okay, so and there is a fear of losing data because there is a single point of failure. Like if a server is crashed or some ransomware has attacked your server, then all the data will be lost because there is no backup file on local machines. And there is a painful merging because, as I mentioned before, that every change you will be doing will be happening directly to the server, and if you have pushed a code that has a bug, then it will be reflected on all the local machines. So yeah. All right. So coming to the point, then what is distributed version control system? So basically, in the distributed version control system, you can see that there is a single server, and there are three. In every local machine, there is a repository. Okay, so that repository is keeping a track of the changes. What is a repository? You can visualize a repository as a database system, which is keeping a record of your changes basically. Okay, so it is having a snapshot of your file system that at that particular instance a particular user did that work. Okay, so it is just like that. And when you push that changes to the main server, okay, then they will be reflected there, and every server and every local machine will be pulling that server, pulling the data, pulling that information from the main server, and then they will be, that change will be reflected. So this is a very flexible version control system as compared to the previous one. So there are some version control system tools. There is Git, there is Mercurial, and there is SVN, and there is CVS, and many more. Okay, so talking about here, CVS, the CVS is a
centralized version control system, and all Git, Mercurial, and SVN are distributed version control system. And the CVS was initially introduced but didn't work because of the cons of CVCS. Okay, so what is Git? Now introducing Git and GitHub. So let's see what is Git and GitHub. So Git is basically nothing but it is a version control tool bilingual. Okay, so Git basically is a version control tool. Like आप जो हैं वो अपनी सारी changes जो करते हैं, ठीक है, वो आप किसी एक database system में दे रहे हैं जो कि वो आपको record दे रहा है सारी system का. एक snapshot लेते हैं file system का, and that snapshot is being recorded. Okay, Git is installed and maintained on your local system rather than on the server. यानी आपने क्लाउड सर्वर का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, आपकी जो लोकल मशीन होती है सारे चेंजेस वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है. एंड द फर्स्ट इट वाज डेवलप्ड इन 2005. जो लिनक्स के बेसिकली जो क्रिएटर थे लिनक्स रिवार्ड, उन्होंने बेसिकली ये बनाया था. ही वाज वर्किंग ऑन लिनक्स एंड ही फाउंड द नीड ऑफ इट, so that's why he created it too. And talking about GitHub, so GitHub is designed as a Git repository hosting service. So basically GitHub में हमारा सारा कोड पड़ा होता है. Like every user needs to pull the code. Like किसी को चाहिए किसी collaborate करना है अपने, जैसे GitHub को ऐसे समझ लेंगे जैसे Facebook हो गई और Instagram हो गया. We basically connect with other users and collaborate with other people on that. आपका कोड वहाँ पे पड़ा होता है, किसी और को देखना है, आपका पोर्टफोलियो देखना है, that is GitHub. That is the place. GitHub is exclusively cloud-based system. Okay, so you will be doing all the collaboration there. Git is serving you locally while GitHub is serving you on the cloud machine. Okay, so now visualizing Git and GitHub, you can see that the I used the word repository. मैंने repository का word use किया था, तो Git is something, एक Git repository हम initialize करते होते हैं, ठीक है. So Git repository is something that is recording changes on your local system, and GitHub is the main server. See here that server की जगह हमारा GitHub आ गया है, और यहाँ पे repository जो local machines में है वहाँ पे हमारे Git आ गया, और ये workstations हमारे. So it's simply like that. I hope that's clear to you all. Okay, so what else? So GitHub is basically your online portfolio when you are applying for a job. आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आपका सारा कोड जो आपने काम किया वो कहाँ पड़ा होता है, आपके GitHub में पड़ा होता है. लेट मी शो योर माइन फॉर GitHub के आपको बेसिकली मेंटेन करना होता है अपने GitHub. दिस इज माय पोर्टफोलियो या माय GitHub account. So you can see there are 47 repositories and 4 organizations have joined. So yeah, okay. So now coming to the next point, Git Bash versus Git Desktop. So okay, so there are two types of tools हमारे पास जो है available होते हैं. एक होता है Git Bash और एक होता है GitHub Desktop. So basically दोनों एक तरह का काम करते हैं. इनिशियलाइज करती होनी हमें Git repository इनिशियलाइज करनी होती है और फिर जो है वो पुश करना होता है सर्वर में. हमने लिंक्स आपको सेंड भी किए थे उस पे ईमेल्स पे भी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिख दिए हैं. And this is the link for GitHub Desktop. You can use it too, but in this session we will be covering Git, so make sure you have it downloaded. All right, so now GitHub Developer Student Pack. So what is GitHub Developer Student Pack? GitHub Developer Student Pack basically एक benefits देते हैं GitHub वाले, क्योंकि आप जो है वो $200,000 के जो आपके पैकेजेस हैं वो आपको फ्री में मिल रहे होते हैं जब तक आप स्टूडेंट हैं. सो यू कैन गो टू द साइट education.github.com/pack/offers. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट यू कैन एक्वायर, सो ऑलमोस्ट वर्थ ऑफ 200K. तो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, आपने स्टूडेंट्स पे जाना है, ठीक है, और स्टूडेंट्स पे जाके आपने गेट बेनिफिट फॉर स्टूडेंट करना है, एंड यहाँ पे जाके आपने अप्लाई कर देना, एंड यू विल हैव अ प्रो बैज ऑन योर GitHub अकाउंट लाइक this pro badge, and you will get all the benefits. So yeah, okay, and
make sure you do that. Okay, so coming to the next point, what is open source? हमें ये तो पढ़ लिया कि Git भी होता है, GitHub भी होता है, लेकिन फायदा क्या होता है इन सब का कि हम अपना कोड क्यों रखें वहाँ पे? So फायदा ये होता है कि open source. So what is open source? It is software for everyone. Like everybody can use the software which everybody can use. It's free, it's open, and it's redistributable. Okay, so everyone can use it, and everyone can contribute to the code you are uploading on GitHub. So, but you have to make sure that you are always abiding by the open source license provided in the repository. There are many licenses, like MIT is the most commonly used license, and then there is a GNU license, there is an Apache license. So make sure you see those licenses on this opensource.org/licenses. Okay, so why open source? Why should you use open source, and why should you upload your code there on GitHub? So basically community building, because people love to communicate and collaborate, okay, and rapid development. So basically आपको Windows में एक फीचर पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक लिनक्स में फीचर समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि वो अपडेट हो, तो आपके पास एक GitHub रिपोजिटरी बनी हुई है लिनक्स की, आप जाएं वहाँ पे जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, GitHub का उसके कोड डाउनलोड करें लिनक्स से, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप पुश करें चेंजेस, आपके मर्ज हो जाएंगे और वो एक नया वर्जन बन जाएगा लिनक्स का। सो इट्स दैट इजी। लाइक बट विंडोज में क्या है कि वो एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई बग है आपका तो आप रिपोर्ट करेंगे विंडोज वालों को, फिर विंडोज वाले देखेंगे अपने कोड में, और उसके बाद जाके महीनों बाद आपकी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। जबकि लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास खुद का कंट्रोल है, आप जाके खुद जो है वो उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट बिकॉज पैरेलल मोड ऑन, बिकॉज जो है वो आप सीरियली वर्क नहीं कर रहे होते, पैरेलल मोड में वर्क कर रहे होते हैं। ऑलराइट, so and the wonder of open source Linux, because Linux is basically said that has so many flavors. आपने देखा होगा कि विंडोज पहले आ चुकी है, हमारे पास विंडोज 95 का वर्जन आया, विंडोज 7 थी हमारे पास, विंडोज XP थी, लेकिन लिनक्स के आप इतने सारे फ्लेवर्स देख सकते हैं और इतनी डेवलप्ड OS है वो, और इतने सारे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसमें। So basically it's all because of open source. And one thing to know that Microsoft is an active contributor to Linux kernel. So being a मतलब यहाँ पे कंपटीशन वाली बात नहीं आ रही जब आप ओपन सोर्स में काम करते हैं। That's all your love for open source and your love for contribution that matters. Competition doesn't matter. So you can see that Microsoft, being a competitor of Linux, is an active contributor to Linux kernel. Okay, so what if there is no open source? Like हमें अगर open source exist नहीं करता होता तो क्या होता? So there will be no Mozilla Firefox. It is an open source software. No Python, Java, PHP languages. No Blender, all the graphics synthesis here, and computer graphics software tool set है Blender हमारा. And no Linux, the most evolving OS of all time. Alright, so top open source programs you should look for. I can just name them a few. There's an MLS fellowship. There's Google Summer of Code, and there's a Hacktoberfest that has just passed. That was a month-long open source celebration. Do check them out, okay? I'm handing over the control to Arsalan. Okay, so he will be sharing the screen now. Thank you, Asif. I have a quick question. So let me quickly share my screen. Someone please confirm me, am I visible? Is my audio audible and is my screen visible? Yes, you're audible and visible. Yes. Perfect. Okay, so Asim ने जो theory part था वो cover किया है, so I will be now doing the hands-on and showing you what exactly, how exactly can you use GitHub and Git, और आप कैसे इस
GitHub को आप कैसे अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स को के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ग्रुप असाइनमेंट है या आपका FYP है एक्सेट्रा, तो उसमें आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. So before that, let me give you a quick introduction of myself. So I am a team lead at MLH Fellowship, which is an open source program, just like Google Summer of Code. I am a GitHub campus expert. I work on web technologies. I'm a full stack developer and a DSC lead and Microsoft student ambassador. If anyone wants to connect with me, मेरा Twitter, GitHub, हर जगह पे मेरा एक ही हैंडल है, वो है खटक dev, और जो मेरा पोर्टफोलियो है वो भी खटक.dev के नाम से. So if anyone wants to connect with me, feel free to do that. Now coming to the agenda, so we will be starting with installing Git. So I will quickly show you how you can install Git if you still don't know, and then we will go and see कि Git का जो flow होता है वो किस तरह होता है, and I believe this is the most extremely essential part of this whole workshop. You need to understand that in order to like जितना भी अगर आपको Git के flow का नहीं पता तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और काफ़ी ज़्यादा मसले आएंगे GitHub को यूज़ करते हुए. सो Git फ्लो जो है वो एक एक्सट्रीमली एसेंशियल पार्ट है. उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिपोजिटरीज बनती है लोकली ऑन योर ओन हार्ड डिस्क, एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन मेक अ फर्स्ट कमिट, एंड देन वी विल मूव टू GitHub, और GitHub पे जाके हम रिपोजिटरी बनाएंगे. उसके बाद हम जो लोकल रिपोजिटरी है और जो हमने GitHub पे रिपोजिटरी बनाई है उन दोनों को आपस में सिंक करेंगे, विच मीन्स के जो मैं अपने हार्ड लोकल डिस्क पे मेरे पास जो भी कंटेंट होगा उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं क्लाउड पे अपलोड कर दूँ, मतलब कि GitHub पे अपलोड कर दूँ, सो दैट समवन एल्स कैन यूज दैट एंड सी दैट. एंड देन वी विल मेक ब्रांचेस. ब्रांचेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, आई विल कम बैक टू दैट कि वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्या फ़ायदे हैं. And then in the last we will see how to create a pull request. So उसके बारे में मैं बताऊंगा कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है और कैसे होती है, क्यों होती है, एक्सेट्रा. एंड आल्सो इफ एनीवन हैज क्वेश्चन, जो चैट सेक्शन है आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. सो मैं उसको भी देख रहा हूँ और साथ ही साथ स्लाइड्स भी देख रहा हूँ. सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा. So if you still don't know how to use Git, how to install Git, so ये कुछ links हैं. अगर आप Windows पे है या Mac पे है तो आप git-scm.com पे जा सकते हैं. वहाँ पे आप सिंपली एक सॉफ्टवेयर होगा जस्ट लाइक एनी नॉर्मल सॉफ्टवेयर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर दें और सिंपल जस्ट नेक्स्ट कर दें तो आपका Git इंस्टॉल हो जाएगा. और उसके बाद अभी आगे जितने कुछ कमांड्स होंगे हम यूज़ करेंगे उनके लिए आपको ये वाला ये जो सॉफ्टवेयर है ये मस्ट है. अगर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते तो आपके पास इशू आएंगे. और अगर आप लिनक्स पे है तो आपको ये sudo apt-get install ये करना होगा, और उसके बाद sudo apt-get install space git लिखना होगा, तो आपका Git इंस्टॉल हो जाएगा. अभी अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो यू कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल इट राइट नाउ, क्योंकि अभी आगे जितनी भी कमांड्स आएंगे अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो आपको इश्यू होगा अगर आपके पास Git इंस्टॉल नहीं है. एक क्वेश्चन है कि नेसेसरी टू लिंक लोकल एंड ऑनलाइन रिपोजिटरीज. अगर आप दोनों को लिंक नहीं करते तो आपका जितने भी काम होगा, अगर आपके जो काम होगा अगर आप लोकल डिस्क पे करते हैं, मतलब आपके अपने कंप्यूटर पे, और आप उसको लिंक नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि जितना भी आपने काम किया वो आपके पास होगा, वो कोई और चेक नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपकी BCP होगा. जब आप लिंक करेंगे, आप अपना कोड जो है वो सेंड करेंगे GitHub पे, तब कोई और बंदा भी उसको देख सकता है. फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा, जब तक मैं उसको सिंक नहीं करता अपने रिपोजिटरी के साथ GitHub के साथ, तब तक आप या कोई भी यहाँ पे कोई भी उसको नहीं चेक कर सकता, वो सिर्फ मेरे PC में ही होगा. जब मैं उसको लिंक कर दूंगा, जब मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद कोई भी बंदा उस कोड को देख सकता है और उसको यूज़ कर सकता है और उस पे चेंजेस भी सजेस्ट कर सकता है. सो ये मोस्ट एक्सट्रीम एसेंशियल चार्ट है Git फ्लो का. सो कुछ स्टेजेस होते हैं Git के, एंड यहाँ पे दो मेजर कैटेगरीज है, एक लोकल है एक रिमोट है. रिमोट का मतलब है जो आपकी GitHub रिपोजिटरी होती है, और लोकल का मतलब है आपका जो हार्ड डिस्क होता है, जो आपके पास सिस्टम के अंदर आपके पास स्टोरेज होती है.
सो फर्स्ट में आता है वर्किंग डायरेक्टरी, जिसका मतलब होता है जो भी आप एक नॉर्मल विंडोज़ में जाके राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होती है। उसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं, उसके बाद एक कमांड होती है गिट ऐड। ये जितनी भी कमांड्स हैं इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट जस्ट कीप इन माइंड दैट फॉर ईच to push from one stage to another, we have like all these commands. So जितनी भी commands है इसके बाद इसके लिए मैं डिटेल में आऊँगा, but for now let's ignore that. And so जो फर्स्ट आपके पास डायरेक्टरी होती है वो लाइक जो नॉर्मल न्यू फोल्डर होता है वो होता है, उसमें आपने कोई चेंजेस की है एंड देन वी यूज़ दिस गिट ऐड, जिसकी वजह से वो एक स्टेजिंग एरिया में चली जाती है। ये एक काइंड ऑफ मिडलवेयर है जहाँ पे आपको जितनी भी फाइल्स है आपको वहाँ पे भेजना मस्ट है। सो जो भी फॉर एग्जांपल मैंने कोई बग फिक्स किया या कोई न्यू फीचर ऐड किया, सो मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में पुश कर दिया। उसके बाद उस जितने भी स्टेजिंग एरिया में कंटेंट होगा उसको मैंने कमिट करना है। सो कमिट के लिए मेरे पास एक कमांड होती है गिट कमिट। जब वो कमिट करूँगा मैं बाय यूजिंग गिट कमिट, तो जितने भी स्टेजिंग एरिया का कंटेंट होगा वो लोकल रिपॉजिटरी में चला जाएगा। सो नाउ हमारे पास जब हमारे पास एक लोकल रिपॉजिटरी में आ जाता है कोड, सो तब जो है हमारे पास गिट का यूज़ होता है। लोकल रिपॉजिटरी से आने से पहले अगर हमारे पास कोड वर्किंग डायरेक्टरी में होता है तो इट्स लाइक जो सिंपल आपके पास फाइल होती है, लाइक उसमें आप हिस्ट्री पे नहीं जा सकते। अगर आपने एक्सीडेंटली कुछ चेंजेस कर दिए तो आप 2-3 दिन पहले का जो कोड होता है उसमें नहीं जा सकते, आपको उसको लोकल रिपॉजिटरी में लाना होगा। सो ये दो स्टेप्स होते हैं। आपको जितना कोड होता है आपको पहले एक स्टेजिंग एरिया में लाना होता है, उसके बाद उसको लोकल रिपॉजिटरी में लाना होता है। और जब आपके पास लोकल रिपॉजिटरी में आ जाता है तो उसके बाद आप उसको पुश करना होता है। पुश का मतलब है कि अपलोड करना होता है टू द रिमोट रिपॉजिटरी। एंड रिमोट रिपॉजिटरी जो होती है वो आपकी गिटहब पे होती है। सो हम रिमोट रिपॉजिटरी भी देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है और उसको उस पे अपलोड कैसे किया जाता है। सो ये जो कुछ स्टेप्स है ये अभी भी शायद आपकी समझ में ना आ गए हो, लेकिन जस्ट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड दैट लोकल रिपॉजिटरी के लिए आने के लिए जितने कंटेंट होता है उसको पहले स्टेजिंग एरिया से गुजरना होता है, तब जाके वो लोकल रिपॉजिटरी में आ जाता है। उसके बाद अगर आपको उसको गिटहब पे सेंड करना होता है तो उसको आप पुश कर सकते हैं, लेकिन पुश करने के लिए मस्ट है कि जितना कोड हो आपका या जितने भी कंटेंट हो वो लोकल रिपॉजिटरी में हो। अगर वो इस स्टेज पे है या ये फर्स्ट स्टेज पे है या सेकंड स्टेज पे है विच इज स्टेजिंग एरिया,